स्ट्रक्चर वाइज। एक होता है इंटेरोगेटिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो मैं पूछने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क सम यस नो क्वेश्चंस। डू यू लर्न वर्ड्स एवरी डे? Yes, I learn words every day. कौन सा क्वेश्चन था? यस नो। Yes, no question. अब इसी में जो स्ट्रक्चर होता है ना आपका, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी से पहले अगर लगा दो हमें डब्ल्यूएच वर्ड, तो ये बन जाएगा आपको डब्ल्यूएच क्वेश्चन। व्हाई डू यू लर्न वर्ड्स एवरी डे? I learn words every day for फॉर के साथ आएंगे लगा दो, फॉर इम्प्रूविंग माई। improving myself. वेरी गुड। सोमनाथ, do you use a remote to control something, to operate something? Yes, I use remote. I use a remote. I use a remote to operate many things like TV. So Yes. why do we operate, or why do we use a remote? I use to remote. I use remote. I use remote because I can do many things, like I can increase or decrease the volume. volume and temperature of AC. So next question. Do you meet new people? Yes, sir. I meet new people. Why do you meet new people? I meet new people for experience. कभी कभी टू, हाँ फॉर एक्सपीरियंस, कभी कभी टू भी लगा लें, टू कम्युनिकेट, है ना। डू यू मीट न्यू स्टूडेंट्स एट इंग्लिश पीरियड? Yes, I meet new people in English period. Okay. What do you talk about when you meet them? When I meet them, I ask them his or her personality. Okay. Are you a gregarious person? Yes, I am. Yes, I am a gregarious person. Why do you think you are a gregarious person? ये भी Because डब्ल्यू, ये यस नो क्वेश्चन हो गया कि डब्ल्यू हुआ। I like to make a new friend and to talk with everybody. Do you play cricket? Yes, I play cricket. Oh, where do you play cricket? I play cricket in park. Why do you play there? सर इन पार्क हुआ या एक पार्क हुआ? ऐड हो जाएगा ना, कोई एक छोटे से लोकेशन के लिए ना ऐड लगाते हैं। सर पार्क के लिए छोटा सा ना, छोटा सा एरिया के लिए ना ऐड लगाते हैं ना। हाँ, एट द लोकल पार्क ना। at the local park. ठीक है। So why do you play there? I play there for अच्छा, आपको ना प्ले देयर, जैसे कि जब भी रीजन दे रहे हो ना कुछ भी, तो आप फॉर लगा रहे हो, टू भी लगा सकते हैं, या फिर आई प्ले देयर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर देयर, बहुत सारी जगह है ना, वहाँ पर हम और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आंसर करो, व्हाई डू यू प्ले देयर? I play there to this 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 is park, like I play there for park is nearby my home. वेरी गुड। सोमनाथ, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर होम? I visit my home occasionally, like Diwali and Durga Puja. So why is this the case? Why don't you visit every month or every year? Every month, sorry. Because it makes so because it's so costly to going every month. Yeah. Very good. So do you buy something for your family? Yes, I'm always trying to buy my family clothes, sweets. So why do you buy these things? Because it gives us happiness to me and them. Very good.
Do you respect your elders? Yes, I respect my elder. How do you respect them? कैसे करते हो उनकी बात कर कर उनकी खिदमत कर कर? How do you respect them? I respect my elder Doing a lot of things. doing a lot of things. उनकी बात मानकर obeying them. Example, obeying them. कोई सामान देकर उनको by offering something, है ना? ठीक है. Do you talk to your seniors at English period? There's some time to talk seniors at English period. Why are you trying to talk to them? I'm trying to talk to them because it gives me a knowledge to improving. Very good. So कैसा रहा आपके लिए ये session? Was it helpful? Yes, it is It's helpful. difference. Why do you think so? Why was it helpful? It helps us to speaking. And also to practice Practice. what we are learning. ठीक है ना? Thanks for joining this beautiful session, and I hope we are going to do a lot of things like this. Okay?